समय के साथ हम सीखते हैं, हम मैच्योर होते हैं। जब 2018 में मैं 21 साल का लड़का था, तब मैं ये सब नहीं कर पाता था। मेरी फिटनेस भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, प्रीलिम भी यूपीएससी के हम फेल कर गए, तो कई जगहों पे एक साथ मात खाई। तो वहाँ से हम समझे कि धीरे धीरे एक एक चीज़ को बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो जब आप इतने लो पॉइंट पे अपना फेस कर लेते हैं, उसके बाद जो भी होता है उससे बेटर ही होता है। तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल विच इज़ नॉट जस्ट limited to UPSC preparation, but also post UPSC life, whether you clear it or you don't clear it. जैसे मैं ही मानता हूँ कि UPSC हमें एक नौकरी दिलवाता है, चाहे वो IAS की नौकरी हो, चाहे वो पोस्टल की नौकरी हो. It's just a job, and sometimes we look at this as more than a job, as our entire life, which puts a lot of pressure on us. So there are so many beautiful things in the world to do. There are so many food to try, there are so many places to travel to, so many interesting people to meet, and so many experiences to have, but we limit our horizon and just focus on UPSC. That sometimes adds a lot of stress on us. The other part about having a job, I do believe very firmly that you should have a job or a higher degree going on parallelly with this examination. Firstly, because the financial security of a job gives you confidence in life in general, and that confidence trickle over to the UPSC preparation. Secondly, I believe there is no gap on your resume when you are preparing for UPSC. Sometimes if you don't have a job, then it's hard to get back in the professional world. So career-wise, for most of us who come from middle-class families, we get secured. And lastly, I believe the question that you asked about time management. So when I have to wake up at and reach office at 9 a.m., I know that I'll have to wake at 5 a.m. to study 2 hours before I go to work. On the other hand, on a Saturday, Sunday or a holiday, I love sleeping, so I'll not leave my bed before 11. So that discipline, that efficiency, I believe a job or a parallel activity brings in your UPSC preparation. 2018 में मैं कुछ सीनियर से टच में आया, जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत गाइड किया जितनी उनको समझ थी. तो मैंने NCERT की कुछ किताबें पढ़नी शुरू की थी, बट जो लिंक्स थे वो नहीं बन रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे किसको क्या जोड़ना है. इतने अच्छे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स उस टाइम पे नहीं होते थे, तो थोड़ा परेशानी थी, कुछ समझ आया कुछ नहीं आया, प्रीलिम भी क्लियर नहीं हुआ, तो तैयारी तो वहाँ से शुरू की. करंट अफेयर्स के लिए जो प्रीलिम और मेंस के पहले कंपाइलेशंस आती थी, मैंने उसी पे ही रिलाई किया, क्योंकि मैं पूरे टाइम एक जॉब में था, रोज़ अखबार पढ़ने का टाइम मुझे नहीं मिला, तो कंपाइलेशंस के थ्रू मैंने करंट अफेयर्स को कवर किया. आई वॉज वेरी लकी, मुदित, टू बी I grew up reading a lot of books, so I have a fairly fluent expression. I do not spend a lot of time looking for words, so I believe that was a very important factor in me getting good marks in. I have one of the highest marks in essay, and GS also marks are pretty fine. So, but for some of us whose first language or who's not very bilingual with English, they struggle with those things, and the writing speed becomes slow, so there are chances of missing out on questions. So those aspirants need a lot of writing practice. So for them, they should be writing a lot of tests, but I wrote a couple of tests before my exam, and I believe that was more than enough for me. What worked for me in answer writing was, I pulled out some topper copies from some coaching institute websites, and I tried to align my writing style with them, because UPSC checking is like a black box. You give your answer sheet as an input, something happens in that black box, and the result is there. We don't know what that black box is. So the Bibles of this preparation journey are the topper answer copies. So they should be, so I refer to them extensively, and I try to align my writing style with them, be it making diagrams, be it making maps, headings, subheadings. So a lot of credit goes there, and this is what I would like to suggest to the aspirants. मेरे पास समय नहीं था बहुत सारे नोट्स बनाने का, तो और जनरल स्टडीज में बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं, जैसे अनुदीप सर, शुभम कुमार सर, जयंत सिंह राठौड़ मेरा जूनियर है कॉलेज का, ऋषभ रेवाड़, तो इनके नोट्स को ही मैंने रेफर किया. मुझे लगता है कि नोट मेकिंग डज नॉट कम नेचुरली टू मी. मैं बहुत अच्छे से नोट नहीं बना पाता, बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज, थैंक्स टू द इंटरनेट दैट वाज अवेलेबल, आई जस्ट रेफर टू देयर नोट्स, डिड सम वैल्यू एडिशन हियर एंड देयर फॉर GS. ऑप्शनल के लिए मैंने आधे नोट्स, कुछ टॉपर्स के लिए आधे नोट्स मैंने खुद बनाए.